So guys, as we move towards the end of the episode, it's time for my personal favorite section, and you know, it is all about Ask TG, जहाँ पे मैं देने वाला हूँ जो सवाल आपने पूछे उन सभी के जवाब. Let's see what we have this week. ओके, सो बाय माइक्रोस्कोप मुझे लगता है कि आप बात कर रहे हैं एक मैक्रो कैमरा की, एंड इट्स प्रीटी कॉमन कि आज अगर आप देखते हैं बहुत सारे फोन्स तो यू विल गेट अ 2 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल मैक्रो मोड. इनफैक्ट अगर किसी फोन में the ultra wide camera supports autofocus, it simply means that you can also capture the macro photos using that ultra wide camera. Now in some phones there's an option of using a telephoto macro mode, for example the Vivo's latest X100 lineup. But आप एक और काम कर सकते हैं, and the idea is to attach a small clip-on lens, और अगर आप उस लेंस को यूज करते हैं तो यू कैन यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ योर फोन्स मेन कैमरा, और आप मेन कैमरा को यूज करते हुए बहुत ही क्लोज डिस्टेंसेस पे फोटोज क्लिक कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैक्रो शॉट्स को एंजॉय कर सकते हैं. So my recommendation would be कि आप ये काम किसी प्रोफेशनल से करवाएं, someone who's an expert of achieving all this, and there are plenty people outside जो ये काम कर रहे हैं because people want to restore their old memories into digital formats right now. But still अगर ये काम खुद से घर पे करना चाहते हैं, you would need a tape player, basically a VCR device. साथ में आपको चाहिए होगा एक डिवाइस फॉर द वीडियो कैप्चरिंग, और वो जब आप कनेक्ट करेंगे अपने पीसी या मैक के साथ में तो यू कैन बेसिकली पुल आउट ऑल द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्मेट और आप उसको डिजिटली स्टोर कर सकते हैं. Costing might vary because I'm not sure how much you will get a VCR for right now, or maybe if you have one lying around. But then again, only if you are truly enthusiastic yourself और आपको लगता है कि you have plenty of tapes और वो इन्वेस्ट करना आपके लिए ठीक है, you know, to do it at home. एक ऑप्शन है. अदरवाइज आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप जो प्रोफेशनल्स इस काम को करते हैं उनसे करवाइए. यू माइट गेट बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स. iPhone 12 mini in 2024, I would say if you can avoid, that would be really good, because the thing is, however the phone is good, मतलब उसमें कुछ doubt नहीं है, but then again it's too old and iPhone 12 mini didn't have a great battery life as well. तो अगर आपको एक मिनी फोन चाहिए तो 13 mini was a far better device. और उसके अलावा इफ यू कैन गो यू नो विद अ स्टैंडर्ड साइज्ड फोन तो फिर आप iPhone 12 या iPhone 13 में से कुछ भी ले सकते हैं. बट देन 12 mini I would say is too old for right now. That's 2024. I was thinking of upgrading from my old MacBook system to a newer system, and I was thinking to get a MacBook Air or an iPad Pro for daily tasks. My question is, what would you suggest? Should I get a newer MacBook Air or I should get an iPad Pro? You know, iPad Pro is a fantastic device, but then again, there's something you know that you can do with a laptop जो कई बार iPad पे achieve करना इतना practical नहीं होता है. So again, depends on your workflow. For basic stuff, for you know everyday computing tasks, iPad is amazingly powerful, super capable of achieving everything. But then again, if you want the form factor of a laptop जहाँ पे आपको पता है you want multiple ports, you know, आपको एक proper Mac OS चाहिए यूज करने के लिए, तो फिर तो एक MacBook Air ही आपका solution है. Otherwise, iPad for most tasks is an amazing device.